हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। चलिए अब हम सिविक्स का लेसन जो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। इसमें फर्स्ट दिया है प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर इज द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशंस आर अबाउट डिफरेंट थिंग्स, फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप, the right of citizens, the relationship between citizens and state, subjects of laws to be made by the government, elections, restrictions on government, jurisdiction of the state, etc. ये मैंने आपको लेसन एक्सप्लेन किया तब अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशन डे। Every year 26th November is observed as Constitution Day. The Constituent Assembly enacted the Constitution and adopted it on 26th November 1949. Next question है discuss. इसमें first दिया है A Constituent Assembly was established. Answer. After independence, the representative of the different provinces and the princely states were included in the Constitution Assembly. It consists of 299 members. Dr. Rajendra Prasad was the president of it, and Dr. Baba Saheb Ambedkar was the chairman of drafting committee. Sorry. Question second. Dr. Baba Saheb Ambedkar is called the architect of Indian Constitution. Answer. Dr. Baba Saheb Ambedkar was the chairman of the drafting committee. He had studied in depth the constitution of different countries of the world and prepared our constitution. He presented it in Constituent Assembly. It was discussed article by article. Many amendments were suggested by different members. He made changes in the draft as per suggestions of the Constituent Assembly and making every provision of the Constitution flawless. Due to his contribution towards making of the Constitution, he is called the architect of the Indian Constitution. Next question. What is included in the administration of a country? Answer. Government has to make laws relating to several subjects such as defending the boundaries, protecting the people from external aggression, eradication of poverty, creating employment, education and health services, encouragement to commerce and industries, protection of the weaker sections, making policies for the progress of women, children and the tribal people. Government has to bring about desirable changes in the society by implementing laws. Next है choose the right option. The constitution of this country is primarily unwritten. इसमें हम करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो है इंग्लैंड, क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो था इंग्लैंड का वो पहले प्राइमरीली अनरिटन था, लिखा हुआ नहीं था। सेकेंड है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो हमें इनका नाम पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड हु अमंग दीज वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो महात्मा गांधी हैं, यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। फोर्थ हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऑन व्हाट सब्जेक्ट्स डज द गवर्नमेंट हैव टू मेक लॉज? आंसर. गवर्नमेंट हैज़ टू मेक लॉज रिलेटिंग टू सेवरल सब्जेक्ट्स सच एज डिफेंडिंग द बाउंड्रीज, प्रोटेक्टिंग द पीपल फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, creating employment, education and health services, encouragement to commerce and protection of weaker sections, making policies for the progress of women, children and tribal people. ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 आपका ये फिर से रिपीट है, इसे कर सकते हैं।
यहाँ हमारा एक क्वेश्चन ये देखिए, ये वाला, we celebrate 26th January as Republic Day. We celebrate 26th January as Republic Day because the Indian Republic came into existence on that day. The country began to be governed according to the provisions of the Constitution of India from 26th January 1950. Next, what are the advantages of running a country as per provisions of Constitution? Answer है, all countries in the world have their constitution and they all accepted their principles of governance according to constitutions. और कुछ फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस हमें दिए हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं कंट्री को अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलाएंगे, तो ये एडवांटेजेस हैं यहाँ पर देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ टू function according to rules set by the Constitution. This reduces the possibility of misuse of power and high-handed administration. The Constitution protects the rights and freedom of the people. It establishes the rule of law. The Constitution sets political ideals such as world peace, security and preservation of human rights. So ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हुए। पहले अच्छी तरह से आप लेसन का एक्सप्लेनेशन देखिए, फिर क्वेश्चन आंसर्स कीजिए और फिर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।